Hello students, the question is the maximum percentage error in the measurement of density of a wire is, and the given options are option 1 4, option 2 5, option 3 8 and option 4 7. Given that the mass of the wire is 0.60 plus minus 0.003 gram, radius of wire is equal to 0.50 plus minus 0.01 centimeters, length of the wire is 10.00 plus minus 0.05 centimeters. So the problem is based on the topic error analysis. Now in this particular problem, we have to find out the percentage error. So now the density of a wire is given by mass upon volume, and we know that the volume of a wire, which is basically circular in shape, the cross section circular in shape, so it is given by pi r square, and the volume is pi r square L. The volume is pi r square L. So the error calculation in the density, as a first step, we can calculate the relative error. So the relative error is given by dr upon r, or we can also write it in the form of delta r like this. Delta r upon r is equal to delta m upon m plus 2 times delta r upon r plus delta L upon L. Because when we convert this formula in this form, m r to the power minus 2 L to the power minus 1 upon pi, and since pi is the dimensionless quantity, there is no error in pi, and here the tolerance is given plus minus form, in the plus minus form in the positive side as well as the negative side, and we know that the error always increases. That's why we have to take this positive sign. The error is always positive for different variables. If there are errors in different variables in the physical quantities, so we have to take their sum. So plus delta m by m plus 2 times delta r by r plus delta L by L. This is the total error in the density. This is basically error in the density, delta rho upon rho. Now delta m upon m, here delta is basically this tolerance which is given as, for the mass it is given as 0.003 divided by mass which is 0.60 plus 2 times delta r, tolerance which is given as 0.01 upon r which is given as 0.5 plus delta L which is given as 0.05 upon 10. So this value comes out to be 3 upon 600. 3 upon 600 is 1 upon 200 plus 1 upon 25 plus 1 upon 200. So this comes out to be 2 upon 200 plus 1 upon 25 is equal to 1 upon 100 plus 1 upon 25. LCM is 100. 1 plus 4, which comes out to be 5 upon 100, which is 1 upon 20. So this is the relative error basically, delta rho upon rho, this is the relative error. So the percentage error is the relative error multiplied by 100. So in terms of percentage, this becomes 1 upon 20 multiplied by 100, which is equal to 5%. So we can say that option 2 is correct here. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई है एरर एनालिसिस टॉपिक से, इसमें कहा, इससे हमसे पूछा गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी मेजरमेंट में डेंसिटी ऑफ द वायर के लिए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि डेंसिटी किन किन टर्म्स पर डिपेंड करती है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हम एक्सप्रेस करें तो होगा पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे जो एरर मास में होगी, जो एरर मास के कैलकुलेशन में होगी, जो एरर रेडियस कैलकुलेशन में होगी, जो एरर लेंथ के कैलकुलेशन में होगी, वो सारी एरर्स एड अप होंगी।
लेकिन हमें यहाँ भी देखना होगा कि पावर हर एक वेरिएबल की क्या है। तो हमने इसलिए पावर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले रिलेटिव एरर लिखी है डेंसिटी में, जो कि इन तीनों एरर्स का सम होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर की पावर यहाँ पे 2 है, तो एरर्स के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे +2 डेल्टा आर अपॉन आर होगा। और एरर हमेशा जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स में जो एरर है तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो हमेशा एडअप होता है, हमेशा जुड़ेगा। इसमें कोई भी टर्म हमारा नेगेटिव नहीं होगा, सारी एरर्स जो है वो एडअप होंगी डिफरेंट वेरिएबल्स में। उन सब एरर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आएगा डेंसिटी की एरर में। यहाँ पे टॉलरेंसेस दे रखी हैं, प्लस माइनस फॉर्म में दे रखी हैं। तो इस तरह से हमने जो टॉलरेंसेस हैं वो पुट करी डेल्टा की फॉर्म में, जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं न्यूमरेटर में पुटअप करी, और जो वैल्यूज़ हैं लाइक 0.60, 0.50, 10.00 वो पुट करी हमने डिनोमिनेटर में। सॉल्व किया तो हमारा रिलेटिव एरर डेंसिटी में आती है 1/20। रिलेटिव एरर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विद 100 तो हमें मिलती है परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर कम्स आउट टू बी 5%. So option 2 is correct here. Hope you understand the explanation. Thank you.